Kane Parsons is 20 years old who has made a film which has grossed around $300 million worldwide. हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स पूरा रेडिट छान रहे हैं ताकि वो एक और हॉरर लेजेंड पे फिल्म बना सके जिससे वो और पैसा छाप सके। यार फिल्म तो बढ़िया है बट फिल्म पर एक्चुअली बात करने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट बैकरूम्स एक्चुअली आर। So in 2019, someone posted a single photograph on 4chan without any context or without any explanation. Just a blurry image of an empty room with yellow walls and a fluorescent hum with a caption. बस फिर यही से इसकी शुरुआत हुई, where a kid from his room in California used Blender and applied a VHS filter over it, and now it has become the indie studios A24's highest grossing film of all time. तो बैकरूम्स आखिर है क्या? तो बैकरूम्स एक लिमिनल स्पेस है, जगहों के बीच की एक जगह। जैसे अज्यूम करो कि रात में एक होटल के लंबे कॉरिडोर में आपको अकेले खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो आपका दिमाग पैनिक करना शुरू कर देगा एट अ फ्रीक्वेंसी विच यू हैव नेवर रियलाइज्ड यू आर केपेबल ऑफ थिंकिंग ऑफ। यहाँ पे जो कुछ भी है वो या तो फंस चुका है या आपके खुद के दिमाग से बना है। यहाँ आप खुद को भी नहीं बचा सकते। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट फिक्शन, वन कैन एंटर बैक रूम्स वाया नो क्लिपिंग। अगर आपने कभी भी एक वीडियो गेम खेला होगा तो आप कभी कभी नोटिस करते होंगे कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के आर पार चला जाता है जिसके थ्रू उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, विच इज सम ग्लिच इन द गेम एंड इट एंड्स अप समवेयर वेयर इट इज नॉट सपोज टू बी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नो क्लिपिंग। फ्रॉम देयर द इंटरनेट बिल्ट आउटवर्ड thousands of level, each with their own aesthetic and terror. There are entities, creatures that exist inside the backrooms. इंटरनेट की किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप बैकरूम से जोड़ सकते हैं। How did the dinosaurs go extinct? Well, they no-clipped into the backrooms. Where are all the missing people down your street? Well, they just no-clipped into the backrooms. The reason these theories feel compelling is not just because backrooms is something horror, but it is something psychological. The fear that reality has back end of, that there are wrong areas. अब केन पियर्सन उस समय 16 साल के रहे होंगे जब उन्होंने YouTube पर बैक रूम्स की फाउंड फुटेज स्टाइल वीडियो डाली। इट शोड अ पर्सन नो क्लिपिंग थ्रू अ फ्लोर while filming with friends falling into the back rooms, wandering alone through its corridors and eventually being grabbed by something. The camera drops and the footage is found from his camera where only his camera is left and not him. It went viral, more than 190 million views total across his channel. From there he didn't stop. He went on to make elaborate short films, further deepening the mythology by himself. And there comes Async. Async, a private research organization based in California. Originally, they used to develop MRI machines, the technology designed to map the interior of the human brain. But in 1998, they stumbled upon something, a low proximity magnetic distortion device that helped and found that reality has a threshold. There are places among places where we are not supposed to be. They called it the complex, and we call them the backrooms. Async का मेन गोल is to understand what the backrooms actually is. वो रिसर्चर्स को वहाँ भेजते हैं ताकि वो पूरा एरिया मैप कर सकें, वहाँ पे क्या क्या एंटिटीज हैं उनके बारे में स्टडी कर सकें एंड होपफुली वहाँ से जिंदा निकल सकें ताकि वो उसको अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज कर सकें। उन्होंने ये भी पाया कि ये जगह सब कुछ याद रखती है। इट डजंट क्रिएट, it remembers, and the more time the person stays inside the backroom, the more inaccurately it remembers it. Backrooms लोगों की कॉपी अपनी मेमोरी या एक फिलोसॉफिकल लेवल पर कहें उनकी खुद की मेमोरीज से बनाती है जिन्हें हम स्टिल लाइफ्स कहते हैं। They look the same like humans, but everything about them is wrong. The face is there, but it is wrong. They are aggressive, not because they are malevolent, but because something in their reconstruction went horribly wrong, or I must say, went horribly right. As the quote in the lore says, the more time it remembers something, the less it does. अब कमिंग टू द एक्चुअल फिल्म, द फिल्म इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस टू लुक एट। फिल्म बहुत कलरफुल है बट जनरली मुझे कलरफुल फिल्म्स पसंद नहीं आती क्योंकि उनकी सिनेमाटोग्राफी में जो कलर्स होते हैं वो बहुत पॉप आउट करते हैं और it feels like it's hurting your eye. But here they have achieved a certain balance to it with the right contrast and the right sharpness. It has that Wes Anderson feel to it. The interior shots, not just of the back rooms, even a small house or the interior of a furniture shop makes you feel uneasy even though you know that it is filmed on a sound stage. The soundtrack, a constant unsettling texture that makes you feel that the walls are always watching you. The emptiness and the analog VHS sequences are so chilling. Man, I love analog horror. तो क्लार्क एक रिसेंटली डिवोर्स्ड अल्कोहलिक है जो अपने खुद की फर्नीचर की दुकान में सोता है जिसका मैस्कॉट एक पायरेट है। क्लार्क वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट बट ही कुडंट.
He wanted to be a good husband, but he couldn't because everything he did was blame his situation and his circumstances and blaming everything but himself. वो शायद एक बुरा इंसान ना हो, but he has closed his heart to everyone that's close to him or everyone that he thinks is going to hurt them, he pushes them away. उसे लगता है कि he likes being alone, but in the interior it's eating him up. उसकी एक थेरेपिस्ट है जो उसे इस चीज़ से निकालने की कोशिश करती है, बट वो खुद एक विक्टिम है क्योंकि उसने कभी भी एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं देखा बिकॉज ऑफ हर मदर्स स्किज़ोफ्रेनिया एंड एग्रोफोबिया, जिससे वो उसे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर नहीं करने देती थी, दोस्त नहीं बनाने देती थी और वो उस 4 दीवारी में हमेशा कैद रही. फिल्म सेंट्रल मेटाफोर लाइज इन दिस लाइन कि 2 people who couldn't go outside the window. One was told that the window is dangerous and one blamed the window for everything wrong in his life. When Clark gets trapped inside the back room, he likes it in there. His furniture store is there. His memories are there. His ex-wives appear silently, not bothering him and not asking him questions about anything. वहाँ पे वो सब कुछ है जो क्लार्क को चाहिए, उसका अकेलापन, उसे ना टोकने वाले इंसान और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक स्टिल लाइफ जो बिल्कुल उसी की तरह है और उसके मैस्कॉट एक पायरेट की तरह दिखता है. क्लार्क इस अकेलेपन में इतना पागल हो जाता है कि वो उस जगह को अपना घर समझने लगता है, वहाँ के लोगों को अपना खाना समझने लगता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैरी उसे वहाँ बचाने आती है तो वह उसी को ही बंदी बनाकर उससे वैलिडेशन सीख करता है. बट मैरी उसे बताती है कि सब कुछ जो उसकी लाइफ में गलत हुआ है वो उसके खुद की एक्शंस की वजह से गलत हुआ है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने कभी नहीं ली. क्लार्क डीप डाउन एग्री करता है इस चीज़ से, बट वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता. मैरी उससे बोलती है कि तुम्हें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है. डीप डाउन क्लार्क एग्रीज विद हर दैट ही इज़ द सोल रीजन ऑफ ऑल दिस हैपनिंग टू हिम. ही ट्राइज टू फ्री मैरी, बट इन दैट सेम टाइम the pirate Clark comes in and eats him. But the backrooms remembers his cannibalistic tendencies of eating everyone in his life. Maybe that's what the still life remembered, or maybe that's what the still life feared. That maybe deep down Clark does really want to change, and the still life doesn't want him to change. Mary eventually escapes from the pirate and is captured by the Acing people, and the backrooms form according to her own memory, and her still life is shown sitting at the last frame of the film. Now the film is not really about the backrooms, it's more about the psychological and philosophical aspect of the backroom. The film could have been much better if the ending wasn't as bleak. When Mary enters the back room to find Clark, which is an extraordinary thing a therapist would do for her patient, to retrieve a patient who resents her for trying to help him. What this film does with that should mean something beyond survival. What the film needed and what it narrowly misses is Mary saving Clark as a proof of concept, not just rescuing him physically, but the act of rescuing also working. The philosophical core the film is about is opening the window, about choosing to step through rather than watch from behind it. If Mary saving Clark, the man who exemplifies everything she was trained to do, would have meant something more and would have resulted in something leading to the film completing its own metaphor. वो भले ही खुद को अपने बचपन से नहीं बचा पाई, but अगर वो क्लार्क को बचा लेती तो maybe it would have given her closure about something that's so deeply inflicted inside her that she herself hasn't recovered from it. बैकरूम शायद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. थिंक अबाउट इट, हाउ अ जनरेटिव AI मॉडल वर्क्स. You give it certain input and it gives you a certain output. It doesn't remember in the traditional human sense. It approximates. It reconstructs from statistical patterns. The output looks like a thing, but the details are wrong and takes a moment to identify. The hands are wrong, the face is wrong, the proportions are also slightly off. The confidence is there, but the substance isn't there. Backrooms भी यही कर रहा है. Still life, failed generative outputs हैं और जो backrooms के कमरे हैं वो एक memory hallucination है. The backrooms isn't malevolent, it's just trying to do what it does, trying to reconstruct, failing and trying again. But the failures are hostile. Kane makes a good film that joins a list of recent films trying to reinvent horror in a different way, going a more hereditary approach where the drama comes first and that drama becomes the horror in the story. I'd say I found Obsession better than this, but what Kane Parsons does for such a young age is genuinely inspiring and has a long road ahead. A film that's imperfect in ways suggests a filmmaker who knows what he wants to say but is still learning how to say it, which is the best kind of imperfect. I'd love to see more of this world, एक अच्छी कहानी के साथ, डिफरेंट थीम्स को एड्रेस करते हुए एक डिफरेंट स्टाइल के साथ. होपफुली हॉलीवुड इसके पार्ट्स बना बनाकर इसकी आत्मा बैकरूम्स में ना पहुंचा दे. हियर्स बियॉन्ड द रन टाइम साइनिंग ऑफ विद व्हाट